सो फ्रेंड्स, टुगेदर वीकेंड सीरीज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है, जहां हम लोग मैकमिलन बुक के टेल क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं मॉड्यूल डी, जो कि है वेल्थ मैनेजमेंट, उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, यूनिट 23 टू 26। तो ये काफी डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से निकलने के आसार हैं। तो हम लोग सारे ही प्रोबेबिलिटीज को डिस्कस करेंगे। साथ ही हम लोगों ने यहाँ पे क्या प्लान करा है कि जो बुक है, उस बुक का जो MCQs है, उसको हम लोग यहाँ पे इन डिटेल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करेंगे वेर एवर इट इज रिक्वायर्ड। अदरवाइज जो क्वेश्चंस हैं उनको डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो ये हमारे पैकेजेस हैं। इन पैकेजेस पे आप एक अर्ली 200 कोड लगा के 20% का फ्लैट डिस्काउंट ले सकते हैं। तो द क्वेश्चन नंबर 1 इज द प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडेड बाय वेल्थ मैनेजर्स इंक्लूड्स investment planning, tax planning, retirement planning, all of the above. So the right answer is going to be all of the above. As per the provision of IT Act 1961, any long-term capital gains arising from the transfer of any capital asset would be exempted from the tax under 54 EC of the Act if the entire capital gain realized is invested within how many months for the date of transfer is eligible bond. So within 6 months, if the whole outcome of the capital gain is printed or somewhere capitalized, in that way we can exempt the tax. So the third one, the perpetual bond is the financial instrument with 3 months maturity date, 5 months maturity date, 3 years maturity date, 5 years maturity date, 10 years maturity date, or no maturity and unlimited maturity. So the right answer is going to be unlimited maturity date, because इनका जो नाम है वही है perpetual. Out of the following, which type of asset management is not followed by wealth management? So asset allocation management, concentrated management, diversified management, tactical management. So the concentrated management, this is not followed by wealth management, क्योंकि wealth management का काम ही है आपके फंड को डाइवर्स करके उसको एम्पलीफाई कराना. So which of the following is not the element of investment? So illiquidity, return, safety, risk. So illiquidity, so again it was not. investment का मतलब है liquidity. तो यहाँ पे क्या है, illiquidity. That's why we are telling this is not the element. So the full service investment bank offers the following services: underwriting, the merger and acquisition, the equity research, all of the above. So the right answer is going to be all of the above. So SEBI has mandated that one must have a minimum corpus of INR to investing with PMS. So it is rupees 50 lakhs minimum in INR to investing with PMS. As per the SEBI guidelines, the minimum net worth required of a portfolio manager should be 10 crores, 100 crores, 5 crores, no such requirement. So it is 5 crores for portfolio manager. In new tax regime, the exemption limit for super senior citizens age 80 and above the financial year 21-22 is 2.5. Friends, this question is the tail question of Macmillan, जहां आपके पास जो डाटा है वो 21-22 का है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट डाटा है आप उसको एक बार देख लेंगे, क्योंकि जो एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चंस जो है वो रिवाइज हो सकते हैं. अभी के हिसाब से जो डाटा है वो 5 lakhs है, लेकिन आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे अपने. द रिबेट अंडर सेक्शन 87A of Income Tax Act help taxpayer to reduce their tax to nil if the income after deduction under Chapter 6A does not exceed 5. So this provision is applicable in new as well as ओल्ड टैक्स रिजीम. सो फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो अभी IT टैक्स के रिजीम्स हैं वो चेंज हो गए हैं. इस पे एक सेपरेट वीडियो है हमारा, आप उसको देख सकते हैं. इफ अ पर्सन विथ हायर इनकम इन्वेस्टमेंट more in
tax saving schemes out of the following? Which option is better from tax saving point of view? So it is old regime. Again, this depends. This question is based on the book, and the book, what answer is provided, we have provided the same, but the same analysis we have provided in new tax regime video, so you can refer that video as well. The para banking refers to distribution of life insurance policies only, distribution of non-life insurance policy, distribution of mutual fund schemes only, all of the above. So the right answer is going to be all of the above. The bank distribute the following type of products in life and non-life insurance business, such as regular premium individual policy, single premium single policy, group insurance policy, all of the above. So the right answer is going to be all of the above. So the corporate agent, banks can distribute the products of one life insurance, one non-life means general insurance, standalone health insurance company, all of the above. So the right answer is all of the above. The maximum number of mutual funds that can be distributed by banks as a corporate agent is 1, 2, 5, no limit. So there is no limit regards to that. Which of the following is not the silent feature of mutual fund? So professional management, diversification, complexity, and liquidity. So complexity is not the silent feature. So friends, आपने हमेशा इस क्वेश्चन को जहाँ पे इसका रिवर्ट या इन्वर्टेड आंसर रिक्वायर्ड होता है, आपने उसको ध्यान से देखना है. TREDS was launched in 2016 for MSME to extend credit at a very competitive interest rate. The migrated credit risk, discount trade receivables of MSME, all of the above. So the right answer is going to be all of the above. So I hope friends, ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट था, आपको पसंद आया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ से गेन किया, देन वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम. थैंक यू.